हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर आप जो फुटेज देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं जिसमें एक प्लेन बर्न हो रही है, ये एक रियल वीडियो है जहाँ पर जापान एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 516 की हालत हुई थी हाल ही में। तो यहाँ पर क्या हुआ था, 379 पीपल वर ऑन बोर्ड एंड दिस प्लेन विच वॉज लैंडिंग ऑन द रनवे, इट कोलाइडेड विथ एन अदर जापान कोस्ट गार्ड प्लेन, जो कि छोटी छोटी सी प्लेन थी जिसमें 6 लोग थे, उसके साथ कोलाइड हुई। लेकिन मिराकुलसली 379 people on board, they were evacuated safely just within 18 to 20 minutes thanks to the immediate and rapid action जो एयरलाइंस के एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पर लिया टोक्यो एयरपोर्ट पे। तो देखते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ था। सो आई एम एक्चुअली गोना रीड आउट द बीबीसी कवरेज। बेसिकली बीबीसी ने यहाँ पे उनकी वेबसाइट पे क्या लिखा है मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। So, pilots of a Japanese airliner that collided with a smaller plane at Tokyo Haneda Airport were initially unaware that their jet was on fire. उन्हें तो एक्चुअली पता भी नहीं था कि एक्चुअली जेट फायर पे है। So, एक फ्लाइट अटेंडेंट ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि कैबिन फायर पे है। जापान एयरलाइन स्पोक्सपर्सन सेड दैट। उसके बाद में 379 people on board they were evacuated and they proceeded with life-saving precision. Unfortunately, 5 of 6 people on board the smaller Coast Guard plane, a Bombardier Dash 8, died. Captain बच गया उसमें से. Right after the plane touched down, the pilot felt a sudden shock and lost control to stay in the runway. A fire took place, but the pilots didn't recognize it in the beginning and learned about it from the cabin attendant. So, there were 3 pilots basically, 12 flight attendants on board when the incident took place. The aircraft's announcer system damage हो चुका था, तो क्रू को मेगाफोन्स और अपनी आवाज़ से ही सारे इंस्ट्रक्शंस देने पड़े। द फर्स्ट थिंग कैबिन अटेंडेंट्स डिड वाज पैसेंजर्स हु रिकॉग्नाइज्ड दैट द प्लेन वाज ऑन फायर वाज टू मेक देम स्टे काम एंड नॉट टू स्टैंड अप, क्योंकि अगर वो उठ के भाग दौड़ करने लगते तो सिचुएशन और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती। आपने मेरा एक वीडियो जो है मैंने स्टैम्पीड पे बनाया था कुछ दिन पहले, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। बिकॉज भगदड़ जब मचती है, स्टैम्पीड होती है और स्टैम्पीड होने से बहुत ज़्यादा सिचुएशन हो जाती है। तो ये जो फ्लाइट अटेंडेंट्स है, इन्होंने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए लोगों ने फॉलो किया। So the announcement system was unusable, so these instructions were made without it. The Japanese media have described the evacuation as a miraculous 18 minutes. Passengers left their hand luggage, dashed to emergency exits, and slid out of the aircraft before it was engulfed in flames. Smoke started to come into the cabin and spread out. Cabin attendants and passengers, वो लोग उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे लीव योर बिलोंगिंग्स, टेक ऑफ योर हाई हील्स एंड हेड डाउन. Their cooperation was the key for all passengers to escape quickly and safely. The Japanese authorities said that late on Wednesday that the Coast Guard plane was not cleared for takeoff on Haneda's runway. Please make a note of this. जो कोस्ट गार्ड का प्लेन था वो रनवे के ऊपर आने के लिए, टेक ऑफ के लिए क्लियर उसे नहीं मिला था, क्लियरेंस नहीं मिला था। ये जो प्लेन है इट वॉज शेड्यूल्ड टू डिलीवर रिलीफ सप्लाइज टू द अर्थक्वेक हिट एरियाज, जो कि 1 जनवरी 2024 को अर्थक्वेक जो हुआ था जापान में उसके लिए। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स द JAL फ्लाइट was cleared to land on runway 34R at Haneda while the Coast Guard aircraft was hold to taxi to holding point C5. ये एक प्लेस होती है एयरफील्ड टैक्सी वे सिस्टम पे, जहाँ पे उसे परमिशन दी जाती है कि वो वहाँ पे रुके। The transcript shows the Coast Guard aircraft acknowledged the call from air traffic to taxi to the holding point, its last transmission before the collision. So, BBC also has found information that suggests the series of lights of the relevant holding point may not have been working, but experts point out that there are other visual cues like painted markings which would show where aircraft needed to stop short of the runway. So, this is what from the BBC.